Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisecha Sunyavadi Vashajati Satyarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sati Gaur Bhattavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande. Holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Gaur Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Jai Gaur Hari Gaur. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravachakacharya Astatara Satta Shri Srimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravachakacharya Astatara Satta Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravachakacharya Astatara Sata Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Charu Swami Guru Maharaj Ki Anantikoti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mathura Dham Ki, Shri Dwarka Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Navadvip Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Ganga Mai Ki, Shamuna Mai Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakta Devi Ki, Samaveda Bhakta Vrinda Ki, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, the Jagat Guru, Savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki, the Ocean of Mercy, Srila Prabhupada Ki, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shishi, Guru, and Gauranga. Hari Hari Bol. Well, all I can say is that was a perfect person.
मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि वे सिद्ध व्यक्ति थे, पूर्ण व्यक्ति थे. In class today, if you remember the purport, Prabhupada begins by saying that the pure devotees of Krishna are thinking of Krishna 24 hours a day. यदि आज आप प्रातः की कक्षा को याद करें तो उसमें आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान कृष्ण का 24 घंटे स्मरण करते हैं. And that was Srila Prabhupada, and that was Guru Maharaj. वह श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज थे. Just like Guru Maharaj was saying, 16 rounds you are not finished, 16 rounds you just begun. जैसे गुरु महाराज कह रहे थे कि 16 माला का मतलब ये नहीं कि आप पूरा जब खत्म हो गया, बल्कि 16 माला के बाद आपका शुरू हुआ. And he was always engaged in either speaking about Krishna, encouraging people about Krishna, working to build this temple, working other projects. That is also Krishna Katha. वह हमेशा किसी न किसी तरह के सेवा में नियोजित रहा करते थे, भक्तों को उत्साहित किया करते थे, जैसे ये मंदिर बनाने के लिए या फिर और भी जगह मंदिर बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करते थे. ये भी कृष्ण कथा है. So I was talking to Krishna Kirtan today, and we were talking about when I first met Bhakti Charu Swami, Maharaj. हम कृष्ण कीर्तन ग्रुप के साथ बात कर रहे थे और उसमें एक चर्चा कर रहे थे कि जब मैं पहली बार गुरु महाराज से मिला. So I was a brahmachari, but I was on the Radha Damodar party, so we traveled all over North America and, of course, all over India as well. तो उस समय मैं ब्रह्मचारी था राधा दामोदर पार्टी में. उसमें मैं पूरी दुनिया पूरा नॉर्थ अमेरिका और भारत में भ्रमण किया था. And at that time, I pretty much knew every sannyasi in the movement. उस समय मैं लगभग सारे सन्यासी जो आंदोलन थे उनको जानता था. But then, in October 1977, when I went to Vrindavan to see Srila Prabhupada, there was this new sannyasi. लेकिन जब मैं अक्टूबर 1977 में वृंदावन गया श्रील प्रभुपाद के दर्शन के लिए तो मैंने एक नए सन्यासी को देखा. And Tamal Krishna Maharaj, because I was on his Radha Damodar party, I was one of his boys at that before. Things kind of dissolved, but he knew me and he introduced me. He said, yes, this is Bhakti Charu Swami. तो श्री श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारी समूह के भक्त थे तो उन्होंने मेरा श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से परिचय कराया. And the first thing I thought is, I've never seen this person before. और मैंने इनको देखा तो मैंने सोचा नहीं ऐसे व्यक्ति को तो मैंने कभी देखा ही नहीं. And the second thing I thought was, he's too good looking to be a sannyasi. ऐसी चीज मैंने सोचा कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छे दिखते हैं एक सन्यासी के होते हुए. And I said, oh, Hare Krishna Maharaj, and he went, Hare Krishna. And then just brief talk. बस ऐसे हरे कृष्णा इतना ही बस थोड़ा सा ही बात हुई. But due to some circumstances, I was very fortunate to be allowed into Srila Prabhupada's room. लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे यह अनुमति मिली कि मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में जा सकूं. I was coming out of Krishna Balaram's guest house, and I was going to chant my japa in front of Krishna and Balaram. तो मैं कृष्ण बलराम गेस्ट हाउस से बाहर आकर अपना जप कृष्ण बलराम के सामने करने ही वाला था. So one of Prabhupada's servants came out just as I was walking by. I mean, if it had been 2 minutes sooner, it wouldn't happen. If it had been 2 minutes later, but it was perfect timing. तो उसी समय श्री प्रभुपाद के एक सेवक दौड़ते भागते आए और अगर ये थोड़ा सा भी 2 मिनट आगे पीछे हुआ होता तो ये नहीं हो पाता. And Upendra was his name. He's my god brother, and he said, "Excuse me, Prabhu, could you do me a favor?" And I said, "Yeah, sure. What is it?"
तो श्रीपाद उपेंद्र प्रभु मेरे गुरु भाई हैं, वो हमसे बोलते हैं, प्रभु क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम कर सकते हो? He said, could you come in and be with Srila Prabhupada? उन्होंने बोला कि क्या आप आके थोड़ा देर श्रील प्रभुपाद के साथ रह सकते हैं? And I was like, what? और मैं सोचा क्या? And I said, well, I don't understand. And he goes, Prabhupada has been asking for all of his disciples to come and be with him. And no one is coming. और फिर उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद अपने सारे शिष्यों से बोल रहे हैं कि वे आए और उनका दर्शन करें, कोई शिष्य नहीं आ रहा। And he says, you're here. And I said, yeah, I'll definitely come see Srila Prabhupada. So I got to go into his room, and that was at about 2:00 in the afternoon, and I got to stay at Prabhupada's feet till 9:00 at night. तो उन्होंने बोला अब आप यहाँ पे हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं अभी ही पे हूँ। तो फिर मैं उस समय श्रील प्रभुपाद के कमरे में गया, उसमें दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे में ही था, उनके चरण कमलों के पास। And at the end of the night, Upendra came up and said, thank you, Prabhu. Thank you for being with Srila Prabhupada for the last 7 hours. और फिर रात को फिर श्रीपाद उपेंद्र मेरे पास आके बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आप पिछले 7 घंटों के साथ श्री प्रभुपाद के साथ, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। It was one of the weirdest conversations I had in my whole life. ये मेरे लिए सबसे विचित्र एक संवाद था पूरे जीवन में। And then I said, because I'm a book distributor, right? You want to get the biggest donation you can. We always ask for $100. Yeah, and that's what people usually did. Just laugh. तो जैसे कि मैं पुस्तक मित्र था, तो हम लोग बड़े-बड़े दान मांगा करते थे। तो जैसे कि हम कम से कम तो $100 मांगना ही करते थे। So I said, so Prabhu, can I come tomorrow? All he can do is say no, right? तो फिर उसके बाद मैंने पूछा कि क्या प्रभु मैं कल फिर आ सकता हूँ? मैं इससे भी पूछ सकता था। And he said, oh, would you? और उन्होंने पूछा क्या सच में? I said, oh yeah, definitely I'll come tomorrow. I said, what time can I come in? मैं बोला मैं निश्चित ही आऊँगा, आप बताओ मैं किस समय आऊँ? And he said, well, what time would you like to come? और उन्होंने पूछा बताओ किस समय आना चाहिए? Well, I'm not going to ask for $100. I'm going to ask for $1 million now. I'm going for the whole thing. I'm going for the rhino. So मैं सोचा मैं कोई अब $100 नहीं, पूरा लाखों डॉलर मांगूंगा। अब जैसे गैंडा का शिकार करने जैसा मैं कुछ करना चाह रहा था। So then I said, well, how about right after Mangal Arti? And he goes, okay. तो मैंने सोचा कैसा रहेगा अगर मैं ठीक मंगला आरती के बाद आऊँ? तो उन्होंने बोला ठीक है। So I'd go to Mangal Arti. Right after Mangal Arti, I'd go into Srila Prabhupada's room, and I would stay in Srila Prabhupada's room till 9:00 at night. तो ठीक मंगला आरती करने के बाद मैं श्रील प्रभुपाद के रूम में गया और वहाँ पे पूरा रात के 9 बजे तक। And I did that for 2.5 weeks. और ऐसा मैंने 2.5 सप्ताह तक किया। So many ecstatic things obviously happened. This was the pinnacle of my life, but I also got to interact more with your Guru Maharaj, Bhakti Charu Swami. तो उस समय मेरे साथ बहुत ही सारी आनंदमय चीजें भी हुई जो मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस समय आपके गुरु महाराज के साथ भी मेरे बहुत सारे आदान प्रदान हुए। And I was telling Krishna Kirtan today, when Maharaj would come in, he would cook for Srila Prabhupada, and he'd bring in the preparations, and all of his movements looked like he was dancing, like he was, his movements, they're all very, it was everything like flowing, like he was a great dancer. That's what I thought. तो मैं आज ही कृष्ण किशोर प्रभु के साथ बात कर रहा था कृष्ण कीर्तन प्रभु के साथ बात कर रहा था। तो वो उसमें मैं बता रहा था कि जब गुरु महाराज कमरे में आया करते थे तो गुरु महाराज दरअसल श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई किया करते थे और वो कई सारे पकवान बनाकर लाते थे। गुरु महाराज के जो आप अगर देखेंगे वो किस प्रकार से हाव भाव होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो नृत्य कर रहे हैं। And he would be bringing in these preparations for Prabhupada. Prabhupada didn't eat very much, but he
Maharaj was able to induce Srila Prabhupada to take some prasadam, take a little prasadam. तो उस समय श्रील प्रभुपाद ज्यादा तो प्रसाद लिया नहीं करते थे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज उनसे थोड़ा सा निवेदन किया करते थे कि वो कुछ प्रसाद दे सकें. And he would, like, if this is Prabhupada's bed, he would kneel right next to Srila Prabhupada and be working everything next to Srila Prabhupada. And Prabhupada would be talking to him, and they would be talking Bengali. श्रील प्रभुपाद के बिस्तर के पास ही वो श्रील प्रभुपाद के पास झुककर उनके साथ बातचीत किया करते थे और सेवा किया करते थे, बंगाली में बात करते थे. And I was sitting right at his feet, and I heard the whole conversation, and I didn't have any idea of what they were talking about. और मैं भी उनके चरणों के पास में बैठा रहता था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि वो क्या बात कर रहे हैं. And one time they were talking, and all of a sudden Guru Maharaj broke out in this huge laughter. एक बार वो आपस में ऐसी बात कर रहे थे, तो उसी समय गुरु महाराज खूब जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे. And Prabhupada was sitting there, and he was laughing too. The two of them were laughing together. और श्रील प्रभुपाद भी बहुत जोर से हंस रहे थे, दोनों हंस रहे थे. And I was so envious. What are they laughing? I just wanted to know what was the joke, right? They were in ecstasy. अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रहा था कि भले ही क्या सोच के इतना हंस रहे हैं, मैं समझना चाहता था. And all the other American devotees that were in the room didn't have a clue. अमेरिकी जितने भी भक्त उस कमरे में थे, उनको कुछ को भी कोई पता नहीं था कि क्या चल रहा है. But it was very, very sweet, very, very intimate. And immediately, like, I was developing affection for this sannyasi. लेकिन वहाँ पे सब कुछ बहुत ही मधुर आत्मीय संबंध था, और मैं तत्काल उसी क्षण से उस सन्यासी के प्रति काफी आसक्ति मेरे मन में विकसित हो गई. Because when he was with Srila Prabhupada, I could see Prabhupada would become quite happy. क्योंकि मैं ये देखता था कि जब वो श्रील प्रभुपाद के पास जाते थे तो श्रील प्रभुपाद काफी प्रसन्न हो जाते थे. So I didn't know this sannyasi, but all I knew is he was making Srila Prabhupada happy, and that was making all of us very happy. तो मैं इस सन्यासी को जानता तो नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये सन्यासी श्रील प्रभुपाद को खुश कर रहा है, तो इस कारण सारे भक्त हम खुश रहा करते थे. And then Prabhupada was just in his rooms for, I mean, he didn't come out for weeks at a time. And then one day, Prabhupada said, I want to see Krishna Balaram. तो श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में थे, और कई बार वो हफ्तों तक बाहर नहीं आते थे, और एक बार उन्होंने कहा कि मैं जाके बाहर श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करना चाहता हूँ. So they went and got it. Prabhupada's palanquin. Everyone knows what a palanquin is, right? तो सब पालकी जाते हैं श्रील प्रभुपाद की. And they brought it in, and Tamal Krishna Maharaj said, Uday, you carry Srila Prabhupada. तो सब पालकी लेकर आए, और श्री श्रीमद तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रीपाद उदयानंद प्रभु आप ये पालकी उठाइए. And then there was another brahmachari. I was in the back, and he was in the front. तो एक अन्य ब्रह्मचारी थे, वो सामने से, और मैं पीछे से पालकी उठाए. So Guru Maharaj was running around, getting everything ready, and like just making it perfect. And I'm just sitting there, you know, I was like the horse. गुरु महाराज थे, वो भी वहाँ पे सब कुछ दौड़ भाग करके सब कुछ तैयार कर रहे थे, और मैं एक. So all the devotees came down from everyone that was in, because it was very confusing at the time. There were quite a number of devotees there, but no one was coming into Prabhupada's room, because there was some messages, no, Prabhupada doesn't want to be disturbed. And then someone else said, well, Prabhupada, I did hear Prabhupada said, why they are not coming? Don't they want to be with me? Has my association become so poisonous? Prabhupada said that. Trivikram Swami was sitting next to me when he said it too. We were both. And he always like brings that up to me whenever we talk about this. तो उस समय मंदिर में बहुत सारे भक्त थे, लेकिन सब श्री प्रभुपाद के पास दर्शन करने नहीं आते. तो श्री प्रभुपाद ऐसा कह रहे थे, मैं था और श्री श्रीमद त्रिविक्रम महाराज थे, तो बता रहे थे कि
मुझे नहीं पता कि भक्त लोग मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मेरा जो संघ है इतना घातक हो गया है कि अब वो नहीं आना चाहते. So there were probably 150 devotees there, and they came out and they were outside Prabhupada's room, and they stretched out around Krishna Balaram's temple. तो करीब 150 भक्त थे, वे आए और पूरा वहां से लेके कृष्ण बलराम मंदिर तक कतार में लग गए. And they were dancing in ecstasy. और वे सब परमानंद में एकदम नृत्य कर रहे हैं. And some were laughing, some were crying. It was a very, very emotional thing. They hadn't seen Prabhupada in a few weeks, even though they're right there in Vrindavan. कुछ हंस रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, कुछ रो रहे थे. तो इस प्रकार से सब अलग-अलग प्रकार से प्रतीक करते, क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद को 2 हफ्ते से नहीं देखे थे. So Guru Maharaj and Tamal Krishna Maharaj opened up the doors, and we carried Prabhupada out on the palanquin. गुरु महाराज और श्री श्रीमद तमाल कृष्ण महाराज ने दरवाजा खोला, हम श्रील प्रभुपाद को बाहर लेकर गए. And the devotees went completely wild. और भक्त पूरा पागल हो गए. So, and here's a little note. Back then, I was big like this guy here. Big, not an old man. I was young and stronger, much stronger. But and when I was in college, I had a American football scholarship, so I played American football. And you got to work out and lift weights and stuff. तो जब मैं कॉलेज में था तो मुझे फुटबॉल में छात्रवृत्ति मिली थी. So I was strong back then. इस कारण मेरा शरीर अत्यंत बलिष्ठ था. And Srila Prabhupada hadn't eaten in like 6 months. He was totally like emaciated. It was just, his skin, everything was sunken in. And I thought, well, Srila Prabhupada can't weigh very much, right? तो श्रील प्रभुपाद पिछले 6 महीनों से कुछ खाए नहीं थे, उनका शरीर पूरा दुर्बल हो गया था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, तो हमें लगा श्रील प्रभुपाद का वजन ज्यादा नहीं होगा. So Guru Maharaj helped Srila Prabhupada, and Tamal Krishna Maharaj helped, and Upendra. They kind of shifted Prabhupada off his bed onto the palanquin. तो गुरु महाराज श्री श्रीमद तमाल कृष्ण महाराज और श्रीपाद उपेंद्र श्रील प्रभुपाद को बिस्तर से लेकर पालकी तक लाए. And so I went to pick the palanquin up with Srila, because I picked up the palanquin. It was nothing. It was like 50 pounds. It didn't feel like anything. It was nothing. Just lift it up. तो मैं आसानी से पालकी उठाने गया कि ये तो हल्की होगी, करीब 50 पाउंड के जैसी. But when Srila Prabhupada got on the palanquin, I went to lift, and I could barely lift it up. And I was going, oh my God, what is this? Because Guru is heavy. तो जब मैं पालकी उठा रहा था, उसमें श्री प्रभुपाद आके बैठ गए, तो मैं बहुत ही मुश्किल से उनको उठा पा रहा था, क्योंकि गुरु बहुत ही भारी होते हैं. And then in my mind, for 1 second, I thought, how am I going to walk with this weight? And then I thought, oh, Uday, you're going to walk. You're going to walk. If he kills you, you're going to do it. तो एक क्षण के लिए तो मैं सोचा कि भला मैं उठा के कैसे चल पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं चलूंगा और लेकर जाऊंगा. So they opened the doors. We came out. The devotees were going wild, and we started to circumambulate behind Krishna Balaram. If you've been to Vrindavan, there's that pathway you go around. We started going that way. तो हम बाहर आए, भक्त लोग पूरा आनंद के साथ पागल हो रहे थे और मंदिर की परिक्रमा चालू की. आप लोग गए होंगे, पता होगा. And I believe Yasodananda Maharaj was leading this kirtan. It was incredible kirtan. It was just wonderful, and everyone was just so happy. And Prabhupada was sitting, because his eyes were very sensitive to light, we had sunglasses on him. उसमें श्री श्रीमद यशोदानंद महाराज कीर्तन कर रहे थे, जो कि बहुत ही अद्भुत था,
और उसमें श्रील प्रभुपाद ने सन ग्लासेस पहने थे क्योंकि उसमें उनकी आंखों में धूप नहीं पड़नी चाहिए थी. And we circumambulated Krishna Balaram 3 times. हमने श्री श्री कृष्ण बलराम की 3 बार परिक्रमा की. And then we came in the side door where Gaurnitai's altar is. और फिर उसके बाद हम किनारे के दरवाजे जहाँ पे गौरीताई का विग्रह है वहाँ पे गए. And Srila Prabhupada, and then we kind of set Srila Prabhupada down, and then they had the Govindam prayers, and they started playing them. उसके बाद हमने श्री प्रभुपाद को नीचे Jai Bhakti Charu Swami Maharaj ki Jai. So then, go ahead. और फिर गोविंदम आदि पुरुषम प्रार्थना हुई. So Prabhupada did about the regular time of what it would take to, see Gaurnitai and then move on to the next altar. श्री प्रभुपाद अपने निर्धारित समय के अनुसार गौरीताई का दर्शन करके उनको प्रणाम किए फिर ऐसे अगले ऑल्टर पे गए. And then we got in front of Krishna Balaram. फिर जब कृष्ण बलराम के पास गए And Prabhupada became transfixed on Krishna Balaram. तो श्री प्रभुपाद कृष्ण बलराम पे पूरी तरीके से स्थिर चित्त हो गए. Prabhupada had made a motion like when to move on, he bowed his head like this, and that we knew to, offer obeisances, or everyone offered and then to move him to the next altar. So now we're in front of Krishna Balaram, and Prabhupada is just, I'm looking over like I'm this close. I'm just looking at Prabhupada, and he's looking at Krishna Balaram. And his eyes were just, there was a connection I can't even explain. तो जब श्री प्रभुपाद भगवान के दर्शन किया करते थे तो ऐसे जब झुक के प्रणाम किया करते थे तो हम समझ जाते थे कि उनको अगले ऑर्डर पर ले जाना है. कि जब वो श्री कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे थे तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे उनमें व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार सेदर्शन कर रहे थे और हम इतने ही करीब थे और ऐसा हमें लग रहा था कि वे आपस में कुछ संबंध हैं उनमें. So then Prabhupada just was fixed in Krishna Balaram, and they played the whole Govindam song to the end. We're supposed to go to Radha Shamasundar's altar, right? But Prabhupada was just there, and then they started another one, and they played that halfway through. So they played the entire song, and Prabhupada didn't want to move from Krishna Balaram. और उसमें जो गोविंदम आदि पुरुषम गीत चल रहा था वो पूरा खत्म हो गया जबकि थोड़ी देर बाद वो राधा श्याम सुंदर ऑर्डर तक उनको चले जाए थे लेकिन फिर अगली बार पूरा आधा करीब वो सॉन्ग गीत चला और तब तक श्री प्रभुपाद वहीं कृष्ण बलराम के पास से हट ही नहीं रहे थे. And then I saw this huge tear come out of Prabhupada's eyes, one on each side. And they came down and they went down his cheek. And they were like tears of ecstasy. और फिर हमने huge. I was श्री प्रभुपाद की आंखों से बड़े-बड़े आंसू जो कि आनंद के आंसू थे वो निकल रहे थे. And then finally he bowed like this, and then we moved him to Radha Shyamasundar. फिर उन्होंने उनको झुककर प्रणाम किया और हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर तक गए. And then we took him out the other door that way, and we went around the temple one more time. तो फिर हम उनको दरवाजे से निकालकर फिर से एक बार मंदिर का चक्कर लगाए. And the devotees were just out of their minds. They were they were so ecstatic. They were so happy. भक्त ये सब देखकर बहुत ही खुश थे, आनंद में थे. And we carried Srila Prabhupada back into his room, and Tamal Krishna Maharaj was fired up. और हम श्री प्रभुपाद को वापस उनके कमरे तक लेकर गए और श्री श्रीमद तमाल कृष्ण महाराज एकदम आवेश में थे. He said, Srila Prabhupada, the devotees are totally ecstatic. उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद भक्त पूरा आनंद में हैं. And Prabhupada said, I am ecstatic too. श्री प्रभुपाद ने कहा मैं भी पूरी आनंद में हूँ. And we laughed, and he said, Srila Prabhupada will do this every day, and then your strength will get better. Then we will
travel around India. We'll go to Govardhan. And then we'll travel to Mayapur. And then we'll take you to New York. And then we'll take you to Los Angeles. And we'll take you around the whole world. And all the devotees went, Haribo! तो महाराज ने बताया कि श्रील प्रभुपाद अगर ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम प्रतिदिन आपको मंदिर में ऐसे दर्शन कराएंगे, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम आपको गोवर्धन, वृंदावन, मायापुर, उसके बाद न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, all around the world. चक्कर लगाएंगे। And Prabhupada smiled and he kind of just nodded like this. श्रील प्रभुपाद हंसकर हामी भरे। But then the next day, Prabhupada didn't feel well. लेकिन फिर अगले दिन श्रील प्रभुपाद को अच्छा नहीं लग रहा था स्वास्थ्य। So we didn't take him out again. तो फिर उनको बाहर नहीं ले गए। Anyways, just watching the way Guru Maharaj was his service to Srila Prabhupada and his interaction, there was, I'm not imagining this, there was something different about his relationship and everyone else's relationship with Prabhupada. I have to say that, it's true. तो गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद के जो संबंध थे वे आपस में बहुत ही अनोखे थे। श्रील प्रभुपाद का अन्य भक्तों के साथ जो संबंध था और गुरु महाराज के साथ जो संबंध था उसमें कुछ तो भिन्नता थी, कुछ अलग था, ऐसा मैं मानता हूँ। And while I was in Vrindavan, I just noted how Maharaj was always bringing people in. He was bringing in Kavirajas, he was bringing in God brothers. He was constantly trying to surround Prabhupada with transcendental personalities, which is what and all of us would want if we're departing, to be surrounded by devotees, right? तो जब भी गुरु महाराज वृंदावन में थे तो श्रील प्रभुपाद के पास मैं देखता था कैसे भक्तों को, कविराज को या फिर महात्मा को लेकर आते थे और हम सब यही चाहते हैं कि आखिरी क्षण में हम महान आत्मा के भक्तों के संग में रहें। And when Srila Prabhupada did finally depart, the whole room was filled with devotees and they were all chanting Hare Krishna in unison for some reason. Wasn't even back, it was just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And it just went on and on for hours and hours and hours. और जब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो रहे थे तो पूरा कमरा भक्तों से भरा था और सब हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। And there was one devotee, Prithu Maharaj, or Prithu Das, I believe. He's from Germany. He was, right? Prithu Das. See, what happened is I had to leave Vrindavan. And I wasn't actually at Prabhupada's side when he left. एक भक्त हैं पृथु प्रभु जर्मनी से, मुझे he was there. He was there and I had to leave Vrindavan. और प्रभु जी बताया उन्हें वृंदावन छोड़ के जाना था। श्रील प्रभुपाद के प्रकट के साथ मैं प्रभु जी वृंदावन में नहीं था। I wasn't there. Yeah, but he was there. And so I said, okay, you have to tell me everything that happened. And he was he's German, so he's detail-oriented. They're very, very concise. तो जर्मनी के भक्त हैं तो यानी कि वो सारा जो विवरण है उसको बहुत ही ध्यान गौर फरमाते हैं। And he said, first of all, it was packed with devotees, Prabhupada's disciples, and everyone was chanting. And then someone put a picture of Srila Bhakti Siddhanta at Prabhupada's head.
तो पहले जब प्रभुपाद प्रकट हुए तो वहाँ पे बहुत सारे भक्त थे, हरिनाम कीर्तन करते, और उसके बाद कोई भक्त ने लाकर वहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की फोटो रखी। And then someone else put Krishna Balaram at his head. और फिर किसी अन्य ने कृष्ण बलराम को उनके सिर के पास रख दिया। And then Radha Shama Sundar, Gaurnitai. फिर राधा श्याम सुंदर गौरनिताई। And then Lord Nrsimhadev. फिर नृसिंहदेव। And they had Radha Kund water, and Prabhupada would open his mouth and they would put a drop of Radha Kund in his mouth. और फिर वो राधा कुंड का जल भी लेकर आए थे, और श्रील प्रभुपाद अपना मुख खोले तो वो उनके मुख में राधा कुंड का जल। And they were chanting, and he said the chanting started to get more and more intense. और वे सब भक्त कीर्तन करने लगे, और कीर्तन अपनी तीव्रता पकड़ा। And he said, all of a sudden, even though the room was filled with devotees, he said, all of a sudden, it was as if other beings had entered into the room, like they were Vishnu Dutas or demigods or whatever, inhabitants from Vrindavan. He said you could feel the presence of these beings. And he said the kirtan got completely intense, and everyone was Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, chanting like that. और वो बता रहे थे कि यद्यपि जो कमरा था पूरा का पूरा भक्तों से भरा हुआ था, लेकिन हमको ऐसी अनुभूति हुई कि जो बाहर के भी कुछ प्राणी हैं, जैसे कि विष्णुदूत या फिर वृंदावन के वासी, इस प्रकार से कुछ आ रहे हैं जीव, और उस समय कीर्तन बहुत तेजी से एकदम हरे कृष्णा इस प्रकार से हो गया। And it got more and more intense, and he said that at the pinnacle of this kirtan, Prabhupada said Hare Krishna, and they dropped Radha Kund in his mouth, and that's when he left. और जब कीर्तन तेज हो रहा था, तो जब कीर्तन एकदम अपनी तीव्रता पे पहुंचा, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा, उसी and they dropped Radha Kund, राधा कुंड का जल डाला, and then he left. At the height of the kirtan, surrounded by his loving devotees. अपने प्यारे भक्तों से पूरा उनके बीच में होते हुए वो श्री प्रभुपाद। And who was one of those devotees? His Divine Grace Bhakti Charu Swami. He was there. उनमें से एक भक्त कौन है? श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज। And then he said, at that moment when Prabhupada left, he said the entire bubble just broke, as if they had just all swept away and took Prabhupada back to Goloka Vrindavan. And all the devotees knew immediately. It wasn't like they had to, hey, Prabhupada just left. They all knew. And some of them started wailing and rolling on the ground like insane. That did happen. But the kirtan was so intense, and that's when Prabhupada left. And by the way, he left at the exact most auspicious time of that day. There was a very, very auspicious, 2 minutes, the Kaviraj said. This time is very, very auspicious for departure to Goloka. And that's exactly when Srila Prabhupada left, with whoever they were. They took Prabhupada back to Goloka Vrindavan. जब श्री प्रभुपाद प्रकट हुए, तो जैसे कि कोई गुब्बारा सा फूटता है, उस प्रकार से श्री प्रभुपाद जब प्रकट हुए, तो वो सारा का सारा जो भक्तों का समूह बाहर से आया था, वो उनको लेके लगा कि वो उनको लेके श्री प्रभुपाद को चले गए हैं। और कविराज बताते हैं कि एकदम ठीक क्षण जो पूरे दिन में उस दिन था 2 मिनट का गोलोक वृंदावन जाने के लिए सबसे अनुकूल, ठीक उसी समय श्री प्रभुपाद प्रकट हुए उन भक्तों के साथ जो उनको लेने आए थे।
So fortunately or unfortunately, I was in Orlando when Guru Maharaj left this world. I was, and I just thought, I just want to get him in the same environment that he gave to Srila Prabhupada. That's all I wanted. I just wanted to, whether he stays or goes, he should be surrounded by all of you. All of you, I have to say, should have been there. All of us should have been there. We should have demanded it. But somehow or other, someone stopped me from getting him out. That did happen. And I just thought, you got all these devotees to be around Srila Prabhupada, and I can't even get next to your side. And they were going to let me in. And one person who had legal right on his body, he had power of attorney on his body, said, no, he's not his brother. Because I said, that's my brother. I need to go in. I had Ganga water, I had Radha Kund, I had Vrindavan Das, I had pictures of Radha Madan Mohan. I was going to set up a whole altar and I was just going to chant Hare Krishna Zir. That's all I wanted to do. I just wanted to give Maharaj what he gave Srila Prabhupada. And the doctor said, it's fine, as long as this person gives the okay. And then he said, no, that is not his brother. I am his brother. Who here thinks I'm not his brother? Who thinks I'm not his brother? You tell me I'm not his brother. And they would not let me in to do that. That's all I wanted to do. And I just wanted to take him to the farm. And if he left, all of you would be around him. That was my plan. And I got stopped. And I had to watch what happened. And so that agonized me for a long time. And then I talked to Radhanath Swami for about 2 hours. And I just expressed all these feelings. And he said, you know, Uday, that, oh, wait a minute, I forgot you're supposed to be translating. Sorry. I don't know how you're going to translate that, but Hare Krishna. तो जब गुरु महाराज प्रकट हो रहे थे तो मैं उन्हें ठीक वैसा ही वातावरण देना चाहता था जैसा वो श्रील प्रभुपाद को दिए थे जब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो रहे थे। तो मैं ऐसा चाहता था कि हमें इस प्रकार से हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि जब गुरु महाराज प्रकट हो रहे हो तो वो हम सब के बीच में, भक्तों के बीच में उनको भक्तों के संग में प्रकट होना चाहिए था। मैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना चाह रहा था। और जब मैं उनके पास गया तो मेरे पास गंगा जल, राधा कुंड का जल, वृंदावन की रज, ये सब था। लेकिन वहां पे जो एक व्यक्ति थे जिनके पास गुरु महाराज के शरीर पे अधिकार था, पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो श्रील प्रभुपाद के भाई हैं और मैं श्रील प्रभुपाद का भाई नहीं हूँ। लेकिन कौन ऐसा कह सकता है कि मैं श्रील प्रभुपाद का भाई, लेकिन कौन ऐसा कह सकता है कि मैं गुरु महाराज का भाई नहीं हूँ, मैं ही उनका भाई हूँ। लेकिन वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मेरा ये योजना थी कि मैं उनको किसी फार्म प्रोजेक्ट पे लेकर जाऊं जहाँ पे वे आप जैसे भक्तों के समूह में रह सके। और मैं यही सब इस पे बहुत ही खेद प्रकट कर रहा था। और इस पे मैंने करीब 2 घंटे तक श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज से चर्चा किया। और फिर और उन्होंने क्या बताया? So Maharaj, I expressed myself to him. He said, I know you have so much love for Bhakti Charu Swami. I also have love for Bhakti Charu Swami. He said, but you have to understand that the holy name is not limited. It's not limited. And Prabhupada said, when you chant Hare Krishna, when you chant
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. It goes around the earth 7 times. तो श्री श्रीमद उदयनानंद स्वामी महाराज ने बताया कि मुझे पता है कि आपका श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम है, लेकिन मैं भी उनसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। आपको यह समझना होगा कि जो हरि नाम है यह सीमित नहीं है। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो यह सारे आवरण को, 7 आवरण को पार करके जाता है। So he said, never in the history of our movement has an organized 24-hour kirtan been arranged in every time zone on the planet. And all of that kirtan was directed towards Bhakti Charu Swami. उन्होंने बोला कि कभी भी हमारे आंदोलन में ऐसा जो पूरे दुनिया भर में 24 घंटे कीर्तन का आयोजन कभी नहीं हुआ, लेकिन जब गुरु महाराज का तिरुभाव हो रहा था तो सब स्वतः ही सारे जितने भी समय के जोन है वहां पे स्वतः ही 24 घंटे कीर्तन चालू हो गया। So 24 hours a day, 24-hour kirtan was going on in every time zone on the planet Earth. And they actually calculated that there was over 1 million people chanting for Guru Maharaj. सभी समय के जोन में पूरा 24 घंटे कीर्तन चल रहा था और अगर गणना की जाए तो करीब 10 लाख से ज्यादा भक्त गुरु महाराज के लिए कीर्तन कर रहे थे। I said, fair enough, Maharaj. But that doesn't mean we should not have been surrounding him. Because even though Srila Prabhupada had 10,000 disciples, and we were also chanting, and we were praying specifically, my dear Lord Krishna, if you so desire, you will save Srila Prabhupada. If you so desire. What was this? So. तो फिर मैंने कहा महाराज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पास भक्तों का संग ना रहे कि जो उनके लिए जप कर रहा हूँ। श्री प्रभुपाद के पास भी 10,000 शिष्य थे और वो सब उनके लिए कीर्तन किया करते थे, लेकिन फिर भी कुछ भक्त थे उनके पास। And Prabhupada was requesting every single day for all his disciples to be with him. So if we are following in the disciplic succession from Srila Prabhupada, doesn't he teach us what should happen when the Acharya leaves? तो श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन अपने शिष्यों से यह आग्रह किया करते थे कि वे आए और उनके दर्शन के लिए आए। तो यदि हम गुरु परंपरा को मानते हैं तो क्या श्रील प्रभुपाद अपने आचरण से यह नहीं सिखाते हैं कि जब गुरु प्रकट हो रहा हो तो किस प्रकार से आचरण करना चाहिए शिष्य को? Especially since Guru Maharaj, especially the older devotees, know that whenever even his own disciples were passing away, he would fly there. He would go to wherever they were and be there and chant Hare Krishna by their bedside. Some even passed away in his presence. And he told me that himself. So that was Guru Maharaj's standard. तो गुरु महाराज का जो मानक स्तर ये था कि जब भी कोई वरिष्ठ भक्त या फिर उनका वरिष्ठ शिष्य का तिरुभाव होने वाला रहता था तब वो उनके पास जाकर उनके बिस्तर के बगल बैठकर उनके लिए हरि नाम करते थे। So he did it with his disciples. He did it with his own spiritual master. He was there. He surrounded him, made sure chanting was happening. So if Prabhupada wanted, in my mind, Prabhupada wanted all his disciples, that's what we should have done. We should have just all been there somehow or other. But that doesn't dismiss that the holy name is all powerful. तो गुरु महाराज यानी कि श्री प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए भी यह सुनिश्चित किए कि हरि नाम का जप हो जब वे शरीर त्याग कर रहे हैं। Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu was chanting the Maha Mantra.
So it's important to be around the person when they're. श्री हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम कीर्तन कर रहे, तो ये हरि नाम कीर्तन बहुत ही आवश्यक है. It's just one thing that haunts me. I had to. Yeah, go ahead. ये चीज है जो मुझे बहुत दुखी करती है. I had to see Srila Prabhupada. The last time I saw Prabhupada, they had put him into the ground. They were just covering up with dirt. That was the last time I saw Srila Prabhupada. And the last time I saw Guru Maharaj was in the morgue. They finally let me go in to see him when he had left his body. They let me see his Bapu. जब मैंने आखिरी दर्शन किया श्री प्रभुपाद को, तो उनको समाधि में ले जा रहे थे, और जब गुरु महाराज का मैंने आखिरी दर्शन किया तो वो अप्रकट हो चुके थे. And me and my son Krishna Arjun, we had a kirtan for Guru Maharaj, and we circumambulated his body, and then I took his feet and I put them on my head, and I begged for forgiveness for not being able to get him out of that situation. मैं और मेरे पुत्र कृष्णाष्टमी प्रभु वहाँ पे कुछ देर कीर्तन किए, उनकी प्रतिमा की, उनका चरण कमल में अपने सिर पर रखा और उनसे प्रार्थना किए कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करें, कि हम उनको यहाँ से बाहर ले जा सकें. We had a kirtan for quite some time, and the person who was the nurse there that allowed us to, it was a Chinese man, and he said that was the most beautiful ceremony he ever saw. It was just kirtan, but. तो वहाँ पे जो व्यक्ति ने हमको अंदर आने दिया, चाइनीज व्यक्ति, उसने बोला कि ये सबसे सुंदर अवसर था जो उसने किसी अपने जीवन में देखा, जो कीर्तन हुआ. Guru Maharaj is now here with us. We have his Pushpa Samadhi. He's in Sridham Mayapur. And he is especially in Goloka Vrindavan. गुरु महाराज यहाँ पे भी उज्जैन में पुष्प समाधि में, मायापुर में भी समाधि में, और विशेष रूप से वो गोलोक वृंदावन में है. And we should all just be like the eye of the tiger. I want to see Guru Maharaj again with Srila Prabhupada. That's my fix. That's my focus. That's what I want. And we can all have that same aspiration. And we can all get that. हम सब में यही आकांक्षा होनी चाहिए कि अब हम श्री प्रभुपाद के साथ गुरु महाराज को देखें. So, sorry for taking, I don't know how long I was supposed to go. Huh? It's okay. I just want to say, obviously I'm leaving early tomorrow morning. The proof of the eternality of the soul, and the proof that Guru Maharaj, as a pure devotee of Krishna, can come down and empower all of you, and even me, is that all of you remind me of him. And that's the greatest compliment that I could offer any human being. And I offer that to all of you. तो आत्मा जो शाश्वत है और गुरु महाराज एक शुद्ध भक्त हैं, तो इसका एक प्रमाण ये हो सकता है कि गुरु महाराज आपको और हमको इतना शक्ति प्रदत्त करें कि हम भी
यही मैं सबसे बड़ा आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आप लोग मुझे उनकी स्मृति दिलाएं. So, Prabhupada on occasion would say, you determine your love for your Guru Maharaj is when your Guru Maharaj is no longer there. That you'll push on. That no matter what happens in your life, I will never quit. I will never give up my Guru Maharaj. So, even though in my life I've had a lot of struggles, but I'm never given up on Srila Prabhupada. I'm taking this to the death. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि आपका आपके गुरु महाराज के प्रति कितना प्रेम है ये पता चलेगा जब ये अप्रकट हो जाएंगे. तो कितनी भी समस्याएं आए कभी छोड़ के मत जाइए. और मेरे भी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आई लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी. मृत्यु तक मैं लगा रहूंगा. And all of you can make that same vow for your Guru Maharaj. आप सभी अपने गुरु महाराज के लिए ये शपथ ले सकते हैं. And we can go beyond birth and death. Srila Guru Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanandi, Hare Krishna. Udayananda Prabhu ki. So we are very grateful to His Udayananda Prabhu for coming here and especially blessing us with so many gifts, and we pray for His blessings so that we can Around. And then the first person you see is your Guru Maharaj. आप जो पहले व्यक्ति का दर्शन करते हैं वो है आपके गुरु महाराज. And he reaches down, give me your hand. And he takes your hand, and he puts it into Krishna's hand. और फिर वो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाते हैं और आपका हाथ पकड़कर कृष्ण के हाथ में पकड़ा देते हैं. Hari Bol. And then you pass out again. इस प्रकार से आप भगवत ध्यान. I made that part up. Hare Krishna. So, you go back, Guru Maharaj will reach your hand. He'll grab your hand, and he's going to put it into Krishna's hand. भगवत धाम जाएंगे गुरु महाराज आपका हाथ पकड़ेंगे और कृष्ण के हाथ में थमा देंगे. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Guru Maharaj ki, Gaur Premanandi.